Hello guys, hello everyone. कैसे हो आप सब लोग? So guys, I welcome you all in our next session of the new chapter Geometry 2. तो guys, अब मैंने जैसे आपको बताया था ज्योमेट्री को we have divided into two parts. ठीक है, so बीच में हमने थोड़ा ब्रेक लिया था. We did some different chapters algebra based. Now we are going to continue with the geometry portion. तो guys, it will be great अगर आपने थोड़ा सा रिवाइज कर लिया हो पुराना ज्योमेट्री वाला पोर्शन. So it will help you greatly जब आप इसको अच्छे से आगे से देखेंगे इसको, है ना? All right. So guys, without wasting any time, let's begin this session. So guys, first session guys, आज हम mainly जो cover करने जा रहे हैं guys, that will be quadrilaterals. Different type of quadrilaterals and their properties. All right. So let's begin guys. So guys, let's see various types of quadrilaterals as I told you. So guys, the first type is a parallelogram. So guys, what is a parallelogram? A quadrilateral in which both pairs of opposite sides are parallel. It simply is called parallelogram. है ना? तो गाइस कहने का मतलब ये है कि अगर आपने मान लो एक पेयर ये बना दिया पैरेलल साइड्स का, है ना, इट इज सम पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स एंड देन देयर इज वन मोर पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स लाइक दिस. सो इसमें जो ये फिगर बनेगा बीच में, इट विल बी अ पैरेललोग्राम, राइट? दैट इज व्हाट इट मींस. सो पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल is called a parallelogram. All right, so that is the definition of parallelogram. Now let us see its properties, various properties. Okay, here it is. So guys, let's see the properties one by one. क्या क्या properties होती हैं parallelogram में? So guys, the diagonal divides it into two congruent triangles. We have already done some of the properties guys in the first section of the geometry one that we did earlier, है ना? उस chapter में हमने geometry का कर लिया था portion. But the diagonal divides it into two congruent triangles, of course guys, because सामने opposite sides क्या हैं? Parallel हैं. Okay, I'll go through it briefly. So guys, let's say this is the diagonal. It is dividing it into two equal parts you can say, or two congruent triangles, because guys देखो ये इसके पैरेलल है तो ये एंगल इसके इक्वल, सिमिलरली दूसरी साइड भी पैरेलल है तो ये दोनों साइड्स भी एंगल्स भी इक्वल, and this side is common, the diagonal is common, so the two triangles are congruent by ASA criteria, right? तो इस तरह से गाइस आप इजीली कर सकते हो कि दो ट्राइंगल्स को like the diagonal divides the parallelogram into two congruent triangles, right? तो गाइस once we have done that these two triangles are congruent, तो और बहुत सारी चीजें खुल जाती हैं वहां से, that the opposite sides are equal and opposite angles are also equal. As you can see here guys, single marked and double marked angles का जो sum है वो equal हो जाएगा ना. So opposite angles are equal as well as opposite sides are also equal, right? These are the properties. Then we also covered guys in the earlier session, जो पहले हमने पार्ट किया था ज्योमेट्री का, that the diagonals bisect each other. Now these two triangles can be made congruent and you can prove कि diagonals क्या हैं, bisect करते हैं एक दूसरे को, right? We have already covered these properties. है ना? The fourth is bisector of any two consecutive angles intersect at right angle. Now this is a bit different. तो guys ये क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे? Let me actually make a big new diagram. Okay, let me show you on this side. Okay, so guys, since ABCD is a parallelogram, bisectors of any two consecutive angles, देखो A angle का bisector draw कर दिया let's say आपने, that is angle bisector, not the diagonal. ऐसे guys B का भी draw कर दिया आपने let's say. Okay, so I'll complete here. Okay, let's say guys ऐसे angle bisector बना दिया. So guys ये कैसे आता है 90? Very easy. So this is half of angle A. तो देखो guys, अगर complete angle A और complete angle B they add up to 180, right? Let us understand angle A plus angle B, right? They add up to 180 degree, right? Because the two angles are between the two parallel sides on the same side of the transversal, right? Or you can say the interior angles on the same side of the transversal between two parallel lines are supplementary. तो angle A plus angle B is 180. तो guys ये angle bisector अगर आपने draw किया, this is angle A by 2 and this is angle B by 2. So guys what is the sum of the angles A? इस equation का half कर देते हैं guys. So half of angle A plus half of angle B, this will be 90, right? अगर guys हमने equation का half कर दिया, so this will be equal to 90. So guys अगर angle A by 2 plus angle B by 2 is 90, so that means that
remaining angle must be 90 due to the angle sum property, right? तो guys यहां से हमारी property number 4 prove होती है, right? Now the fifth property is angle bisectors form a rectangle. Of course guys they will form a rectangle. अब अगर आपने यहाँ पे बना दिया ऐसा, now if you draw the another angle bisector of angle D and angle C, तो guys ये angle भी तो 90 होगा, right? This angle is also 90 and also angle A और angle D में भी यही property है, तो ये भी 90 होगा, right? So same is this is also 90. तो guys जो अंदर फिगर बन रही है वो क्या बन गए, चारों एंगल्स 90 बन गए, which means it is a rectangle. All the four angles are 90 degrees, so it is a rectangle, right? Then sum of two consecutive angles is 180, that we already know, that is a property from parallel lines. Now the next one, in a quadrilateral, if both opposite sides are equal, then it is a parallelogram. तो guys ये कैसे आएगा, देखो. So now if in a parallelogram two opposite sides are equal, तो guys देखो अगर ये side इसके equal है, ये side इसके equal है, so now guys you can just draw a diagonal, and since it is common to both the triangles, you can say that these two triangles are congruent, है ना? I'm trying to show you how do we prove that it is a parallelogram, है ना? Diagonal draw कर लेंगे, opposite sides हमें equal दी हुई है parallelogram में, right? Both the opposite sides are equal. That is the only thing that is given, and the diagonal is common. So can I say the two triangles are congruent using SSS criteria, right? Side, side, side. So guys, once these are two triangles are congruent, then you can easily say that this angle, which is opposite to the single line, is also equal to this angle. अगर guys दोनों angles equal हो गए, that means the opposite sides are parallel, right? Because alternate angles are equal, तो opposite sides क्या होंगी, equal होंगी, parallel होंगी, right? Same for the other two sides. So it will become that a pair of that we have two pair of parallel sides, है ना? So they will form a parallelogram. Okay. Now the next is, if the diagonals of the quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram. Okay. So let us go by that also. So guys, let's say एक quadrilateral के diagonals bisect करते हैं. All we know is that the diagonals bisect each other. Okay guys, तो diagonals bisect करते हैं, तो ये side इसके equal है और ये side इसके equal है, right? Since it is bisecting, right? Since they are bisecting each other, and also guys this angle is equal to this angle, vertically opposite angle. So can I say guys that these two triangles are congruent, right? So once they are congruent, तो guys क्या बोल सकते हैं, ये double angle opposite to the double sided line is equal to this angle, है ना? बोल सकते हैं ऐसा. So once they are congruent guys, these two are alternate angles, and if they are equal, that means this line is going to be parallel to this line. Similarly guys, आप दूसरे दो triangles में भी कर सकते हो, तो सामने वाली sides भी parallel आ जाएंगी आपके पास. Similarly, you can prove for this side being parallel as well, right? Since the diagram is symmetric. So guys, ये काफी important चीजें हैं, that what minimum thing do you need, what minimum condition do you need to prove that a quadrilateral is a parallelogram. So guys, you can say both sides are equal, है ना? Both pair of opposite sides are equal, then also it is a parallelogram. And if the diagonals just bisect each other, then also it becomes a parallelogram, है ना? It is a minimum condition for a parallelogram. And also guys, if one pair of opposite side of a quadrilateral is equal and parallel, अब की बार guys अगर equal और parallel हो जाए तो भी parallelogram हो जाएगा. कैसे? Let's understand guys. Let's say guys this pair in this diagram AB is parallel to CD and they are equal as well. Length is also equal, है ना? So how do we prove it is a parallelogram? Again, draw a diagonal. So guys, this side is equal to this side, ठीक है? This side is common, and this angle is equal to this angle, alternate angle, right? Now the two triangles are congruent using SAS criteria, है ना? Side angle side. So once they are congruent, so guys we can say that this angle is equal to this angle, and hence that BC is parallel to AD as well. ये भी बोल सकते हैं ना? We'll be able to say that BC is parallel to AD then. So हो गया फिर से parallelogram, opposite pair of sides are parallel. Okay guys, so all these conditions are enough to prove that it is a particular quadrilateral is a parallelogram. Alright guys, I hope these conditions are clear. Alright, great guys. Chalo, let us see the next figure in a parallelogram.
So rather now guys, what we are going to see are some of the special cases of a parallelogram itself sometimes, है ना? Further conditions for like you can say special cases of parallelogram. तो guys वो parallelogram तो होंगे ही, but rather extra condition satisfy करेंगे, right? So guys, what do we call a parallelogram whose adjacent sides are equal? So a parallelogram whose adjacent sides are equal is called a rhombus. ठीक है? So the second figure is guys a rhombus, a parallelogram in which any two adjacent sides are equal. It is called a rhombus. तो guys सामने वाली sides तो equal होती ही हैं. अगर side वाली भी equal होगी, that means all the four sides are equal. Okay, for rhombus also guys you can say this. If a quadrilateral has all the four sides equal, it is a rhombus actually. है ना? क्योंकि आमने सामने वाली साइड्स अगर इक्वल हैं तो पैरेललोग्राम तो होता ही है, वो हम देख चुके हैं ऑलरेडी. और अगर एडजेसेंट भी इक्वल होगी तो क्या बन गया? पैरेललोग्राम, सॉरी रोम्बस, है ना? राइट गाइस, सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर. ओके, सो गाइस समटाइम्स वी नीड दिस. व्हाट इज द एरिया ऑफ अ रोम्बस? दैट इज गिवन बाय हाफ टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स. ठीक है ना? तो कैसे आता है गाइस? आई विल टेल यू दिस थिंग. सो सिंस गाइस रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, एक्चुअली देयर इज अ प्रॉपर्टी इन द रोम्बस दैट दे आर बाइसेक्ट एट 90 डिग्री. ओके, ये एंगल क्या होता है गाइस? 90 डिग्री होता है. विल कवर इट लेटर, डोंट वरी. ठीक है ना गाइस? ठीक है, विल कवर दीज प्रॉपर्टीज इन द नेक्स्ट स्लाइड, बट फॉर द टाइम बीइंग लेट्स अज्यूम दैट दे आर 90 डिग्री ईच. सो गाइस इफ दिस इज d1/2, the other diagonal is d2/2, है ना? So what is the area? Area is 4 times area of one triangle. And what is the area of one triangle? Half times d1/2 into half times d2. Sorry, into half times d2, right? So guys, as you can see, इसमें ये 4 cancel हो जाएगा इससे. So we are left with half times d1 d2. And that is what the formula is. Half times product of diagonals. Other than that guys, because it is a parallelogram also, base into height formula is also applicable. Other than that guys, product of adjacent sides into the sine of the included angle, है ना? तो वो कैसे आएगा guys? Let's say we have a parallelogram actually. तो guys if you have this side as A, this side as B, and let's say guys this angle is theta, है ना? Angle between the adjacent sides or the included angle. तो guys अगर आपने देखो एरिया क्या होता है? बेस इनटू हाइट. सो कैन आई कैलकुलेट दिस हाइट h, है ना? देखो what is this h? If you in this triangle apply sin theta, what is sin theta? That is h by b. So what is the value of h? That is b sin theta. That is b sin theta. So guys, what is the area of parallelogram? That is base into height. So that is a into h according to that, है ना? और h की वैल्यू क्या है? b sin theta. So that will give you a into b into sin theta. All right. So AB sin theta will be the area of the rhombus. Rather guys, ये थर्ड फॉर्मूला तो पैरेललोग्राम के लिए भी ट्रू है. ओके, प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड्स इनटू साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल. ऑलराइट, इज इट क्लियर? ओके, ग्रेट गाइस. सो आगे बढ़ते हैं गाइस, सम प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस. ऑलराइट, तो गाइस व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? देखो गाइस, कुछ तो क्योंकि ये पैरेललोग्राम का ही स्पेशल केस है तो वो प्रॉपर्टीज तो डायरेक्ट हो जाएंगी. लाइक ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑब्वियसली पैरेललोग्राम का स्पेशल केस है ये. ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट इज अ कंडीशन फॉर इट बीइंग टू बी रोम्बस. बिकॉज अगर ऑपोजिट साइड्स तो पहले से इक्वल थी और आपने जब एडजेसेंट साइड्स इक्वल बोल दी, दैट मींस ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, राइट? नाउ हाउ डू वी प्रूव दैट द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स टू ईच अदर? तो गाइस वेरी इजी टू प्रूव. तो गाइस लेट्स से इफ वी ड्रॉ द डायगोनल्स लाइक दिस. सो हाउ डू वी प्रूव इट गाइस? देखो ये साइड इसके इक्वल है, एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल है ना, है ना? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑपोजिट साइड्स को इक्वल कर सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस यू कैन मेक दीज टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, राइट? साइड इक्वल है, पैरेलल भी है, तो ये एंगल इसके पैरेलल इक्वल होगा. सो द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यू कैन प्रूव दैट, राइट? सो गाइस उससे होगा क्या? यू विल एबल टू प्रूव दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. पहले तो आपको ये प्रूव कर दिया कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, वैसे तो पैरेललोग्राम से भी हो जाएगा. नाउ द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल and this side is common. So guys ये दोनों triangles congruent हो जाएंगे adjacent triangles. And then further you can say
इन दोनों ट्राइंगल्स में गाइज ये एंगल और ये एंगल इक्वल भी है और उनका सम 180 भी है, राइट? द एंगल्स दैट आई हैव मार्क्ड विद ग्रीन कलर, यू कैन सी गाइज ये दोनों एंगल्स इक्वल भी हैं और उनका एंगल का सम 180 भी है, राइट? सो दैट इज सेइंग थीटा इज मतलब बोथ एंगल्स आर थीटा, लेट्स से, ठीक है? सो द सम ऑफ द टू एंगल्स इज आल्सो 180 सिंस इट्स अ लीनियर पेयर। तो गाइस यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90 डिग्री। और यू कैन से इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आल्सो। मेनी वेज यू कैन प्रूव इट गाइस। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मीडियन है, तो दैट इज सपोज्ड टू बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आल्सो, है ना? सो देयर आर मेनी वेज टू प्रूव दिस। आई होप दिस थिंग इज क्लियर, राइट? सो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स टू ईच अदर। बाइसेक्टर तो वैसे भी होते हैं पैरेललोग्राम में, बट द फर्दर एक्स्ट्रा कंडीशन इज दैट दे आर दिस टाइम परपेंडिकुलर एज वेल, okay? And in this case guys, there's special property that the diagonals bisect the opposite pair of angles. तो guys ये वैसे भी तो पता है हमें, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे ना, बिकॉज इट्स एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। नाउ आप आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से बोल सकते हो दैट इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द मीडियन इज आल्सो द एंगल बाइसेक्टर। तो वो भी प्रूव हो गया दैट द डायगोनल्स आर आल्सो एंगल बाइसेक्टर्स, राइट? देन द नेक्स्ट केस, अ पैरेललोग्राम इज अ rhombus if its diagonals are perpendicular to each other। तो अदर वे राउंड भी बोल सकते हैं ना गाइस कि अगर परपेंडिकुलर हैं डायगोनल्स देन वी विल बी एबल टू प्रूव दैट द एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, है ना? उल्टा भी जा सकते हैं, बिकॉज अगर 90 डिग्री पता होगा हमें देन बी एबल टू प्रूव कि ऑल्टीट्यूड है वो, ऑल्टीट्यूड इज द मीडियन आल्सो, है ना? तो उल्टा चलेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से, दैट इज द इफ द मीडियन इज आल्सो द परपेंडिकुलर देन द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस, सो हेंस द एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो उल्टा जाके प्रूव कर सकते हैं। Now the next thing, any parallelogram circumscribing a circle is a rhombus। तो गाइस अगर पैरेललोग्राम के अंदर बोला सर्कल ड्रॉ कर दिया, right? If we are able to draw a circle inside the parallelogram, तो गाइस अगर हम ऐसा सर्कल बना पा रहे हैं, you know why guys this has to be a parallelogram, you can say a rhombus क्यों होना पड़ेगा? I'm not able to draw it properly, okay? चलो ट्राई करते हैं। Okay, somehow I am able to draw this kind of a circle। तो guys ये parallelogram rhombus क्यों होना चाहिए स्पेशली? Because guys the height is how much? How much is will be the height basically? That'll be 2r, right? इधर से भी 2r हो जाएगा। The distance between the two sides, perpendicular distance between the two sides will be 2r each, है ना? तो diagonals या आप कह सकते हो parallel lines के बीच की length, you can say the distance between the two parallel lines will become equal, and that is the condition for a rhombus as well, है ना? क्योंकि सेंटर के थ्रू पास करेगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सो द डिस्टेंस इज इक्वल टू 2r, डायमीटर हो जाएगा दैट इज 2r बोथ वेज, है ना? तो दिस पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन द diagonals, so not the diagonals, between the parallel lines is equal, so it becomes a rhombus from there as well। Okay guys, all the properties are clear? All right, great। चलो आगे बढ़ते हैं। Now let us come further, another property of a parallelogram। What if the diagonals are equal, or you can say one of the angle is 90 in a parallelogram, so it is called a rectangle, है ना? ऐसी शेप को हम क्या बोलते हैं गाइस? रेक्टेंगल। तो गाइस ऑब्वियसली पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, सो इफ वन एंगल इज 90 द सामने वाला एंगल भी 90 हो जाएगा, एंड ऑल्सो सम ऑफ adjacent angles is 180, so this also becomes 90, this also becomes 90, so you can say is that guys कि चारों एंगल 90 डिग्री अगर होंगे it will become a rectangle। तो गाइस रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? diagonals are equal, that's it। so if you can say the diagonals are equal then it is also a rectangle। okay guys, so what are the various properties of a rectangle? Let's see। opposite sides are parallel and equal, होगा ही because it's a special case of parallelogram। all angle are equal and of 90 डिग्री, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। diagonals are equal and bisect each other। तो देखो गाइस bisect तो करेंगे ही because parallelogram है, but why they will be equal? that's quite easy। देखो गाइस हम इसको और इस ट्राइंगल को कंसिडर करते हैं। I'll name the triangles। if you name them A B C D, guys since it's a rectangle we can say triangle ABC
is congruent to triangle ABC हमने बोला तो BAD. It will be congruent to triangle BAD. See कैसे AB साइड कॉमन है ना, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं और बीच में एंगल क्या है 90 ईच. तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए. सो हेंस दैट विल मीन AC इक्वल टू BD. दैट्स इट, है ना, डायगोनल्स इक्वल हो गए. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, व्हेन अ रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, अगर रेक्टेंगल आपने सर्कल के अंदर बनाया तो गाइस सी, if you draw a rectangle inside a circle, okay, let me draw another figure. Okay, I'll draw it, try to draw it here. We have a circle. तो गाइस अगर आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, so the diagonal, see the diagram here, the diagonal, it is subtending 90 degree on the circle, है ना, because rectangle में तो 90 degree होता है. So guys जो diagonal होगा वो क्या होना पड़ेगा, diameter भी होना पड़ेगा, right? It has to be the diameter because it is subtending 90 degree on the circle, so the chord has to be the diameter, because a chord can a diameter can only represent subtends an angle of 90 degree on the circle, right? So when a rectangle is inscribed in a circle, the diameter of the circle is equal to the diagonal of the rectangle. Okay guys, is this thing clear? Okay, for the given perimeter of rectangle, a square has the maximum area. तो guys इसका अभी इसको हम प्रूव नहीं कर पाएंगे in the terms of, in a sense I can say, because we have not done the, you know, the calculus थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा इसमें. But for the time being you can leave it. Just remember this thing, that if we have a given perimeter of rectangle, a square will have the maximum area. Okay, all right, all right. Okay guys, we can prove it in a way. देखो, okay, I'll tell you. Given perimeter है equal, तो guys that means 2L plus 2B is some perimeter P, let's say, है ना. 2L 2 times sides plus 2 times breadth, the sum should be equal to perimeter, right? Now what is the area? The area is given by L into B. तो guys आप B को क्या रिप्लेस कर सकते हो, L into P minus, or you can say L times P by 2 semi perimeter, which is S, which is constant again, minus L. ऐसा लिख सकते हैं guys, है ना, B को. So you can see here guys जो area है, that is a quadratic in L. You can say here, see here, it is the formula minus L square plus SL. So guys you know that a quadratic is maximum when x is equal to B by 2, right? So that means L is equal to S by 2 minus B by 2, so that is S by 2, है ना. So that will give you L is equal to S by 2. ठीक है. तो guys L equal to S by 2 कैसे हो जाएगा, meaning S is equal to 2L, but what was S equal to, that was equal to L plus B, so that gives you L equal to B. So that is the proof for proving, kind of, for the given perimeter of a rectangle, a square will have the maximum area. All right guys, I hope this thing is clear. All right, great. So the next concept, next point is the figure formed by joining the midpoints of the adjacent sides of a rectangle is a rhombus. Okay, so let us prove it. So guys, let's say you have this rectangle. So if you join the middle points, okay. So guys, from the Pythagoras theorem itself, you can prove that all the four lengths are equal, right? Because guys, each of this length is L by 2 and B by 2. है ना, L by 2 B by 2 बन जाएंगे सारे के सारे. This is B by 2 and this is L by 2, है ना. So you can see here all the sides are equal from Pythagoras, so it will be forming a rhombus at least, right? So ये point भी prove हो रहा है. Next point, the quadrilateral formed by joining the intersection of the angle bisectors of parallelogram is a rectangle. That we have already covered, right? हमने वो parallelogram की property में देख लिया है already. Okay, and the next point, say 8th point, if P is any point in the plane of the rectangle ABCD, then PA square plus PC square is equal to PB square plus PD square. Okay, let me show you guys कैसे आएगा. Let me draw it here.
ऑलराइट, देखो गाइस कैसे करेंगे. लेट्स से यू पिक एनी पॉइंट P in between, like here. So guys, what is PA square? Okay, so guys, nothing to be done. आपको ध्यान से बस ये देखना है कि ये जो distances हैं, like what is PA square? Let us say guys, this point is, this distance is X and this is Y. So can I say guys, what is PA square plus PC square? ठीक है, if this is X and Y, what is this distance? This is Y. And okay, if this is all, okay guys, इसको भी नाम दे देते हैं. This, let's say this is C. Okay, और Z दे देते हैं इसको नाम. So if this is Z, okay. So guys, what is PA square plus PC square? What is PA square? That is X square plus Z square. And what is PC square? That is, let's say this is W. So guys, that is Y square plus W square, right? But guys, if you look at this carefully, Y square plus Z square क्या बन जाएगा? What is Y square plus Z square? That is PB square. And what is X square plus W square? If you look at this, what is X and W? So guys, this length is W, this is also W, and this is also X. So in this right angle triangle, X square plus W square will become PD square. So see guys, हम क्या prove कर पाए? That PA square plus PC square is equal to PB square plus PD square. Okay, so the last property is also proven. All right, is this thing clear guys? So many properties, I know guys, it takes some time to prove each and every one. So guys, I would request you guys that please try to prove all of the properties one by yourself. आप जितना खुद से समझ के कर पाओगे ना guys, you'll try to find some different value ways as well. आप different logics और different methodologies भी आप ढूंढ सकते हो guys to prove each and every property for it. Alright guys, I hope यहाँ तक सबको clear है. Alright, चलो. Alright guys, let's continue. Okay, so now the special case of a rectangle further, you can say it is a special case of a rectangle whose adjacent sides are also equal, है ना? Or you can say it's a rhombus whose all angles are also equal, so 90 degree each. So it's a square. तो सारी प्रॉपर्टी गई पहले वाली आपकी इसमें satisfy होंगी ही होंगी, right? So because it is a special case of a rectangle, all the properties of rectangle are also true for a square. So guys, do you remember one thing? So any square is a parallelogram, rectangle and a rhombus, है ना? उन्हीं का further special case है basically. Okay, alright guys, everything is clear up to this point. Let's understand its properties. So guys, let's see. So guys, देखो, all sides are equal. That is the property, of course. Opposite side, pair of sides are equal. Obviously, rectangle है, उसका special case है, तो ये भी होगा. Now, since it's a square, the diagonals are equal and perpendicular bisector to each other. क्योंकि rhombus भी है, rectangle भी है, right? तो rhombus है, तो क्या होगा? Diagonals will be perpendicular bisector to each other. और rectangle है, तो rectangle में diagonals equal है. Third property भी clear है. Now the fourth point, diagonal of an inscribed square is equal to the diameter of the circumscribed circle. तो guys, ये तो rectangle में भी था, है ना? rectangle का भी diagonal था, तो square में भी वैसा ही केस हो जाएगा. तो square में अगर आपने सर्कल ऐसा बनाएंगे, तो स्क्वायर का जो डायगोनल है, ओके, वी कैन कीप इट हियर लाइक दिस. सो गाइस, जो डायगोनल होगा, है ना, सिंस द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज सबटेंडिंग 90 डिग्री एट द सर्कल, दैट मींस जो डायगोनल होगा वो क्या होगा? डायमीटर ही होगा, राइट? इट्स द डायमीटर ओनली, राइट? तो ये भी प्रूव हो गया. नाउ साइड ऑफ अ सर्कमस्क्राइब्ड स्क्वायर इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल. तो यहाँ पे हम उल्टी बात कर रहे हैं गाइस कि अगर आपके पास सर्कल है, ओके, इफ यू हैव अ सर्कल and a square that is circumscribing it like this, है ना? then क्या होगा? साइड ऑफ द circumscribed square, जो साइड होगी वो किसके इक्वल होगी? डायमीटर के इक्वल होगी, right? that is what is written here. And finally, the figure formed by joining the midpoints of the adjacent sides of a square is a square. तो guys, हमने देखा था पहले rhombus होगा, right? so if you have a square, right? so अगर आप guys midpoints को join करोगे, so what you'll observe is, guys, it will make angle 90 degree each, na?
सी गाइस, सिंस दीज टू साइड्स आर इक्वल, मिड पॉइंट्स इक्वल है, ये एंगल 45 होगा, दिस इज आल्सो 45 एंड दिस इज आल्सो 45, सो रिमेनिंग बीच में एंगल कितना आएगा 90 ईच, राइट। एंड फ्रॉम पाइथागोरस वी कैन प्रूव कि एडजेसेंट साइड्स क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी, बिकॉज दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, राइट। तो स्क्वायर के अगर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं दैट विल बी अनदर स्क्वायर, उनके भी मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे इट विल फॉर्म अनदर स्क्वायर, सो इट विल कीप ऑन गोइंग लाइक दिस, है ना। एंड द एंगल्स फॉर्म्ड बाय द डायगोनल्स एंड द साइड ऑफ द स्क्वायर इज ईच इक्वल टू 45, वो तो होगा ही गाइस, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया ना ये वाला। सो दीज टू ट्राइंगल्स आर इक्वल, राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये वाले दोनों एंगल्स क्या बन जाएंगे 45 डिग्री ईच, राइट। सो ऑल द प्रॉपर्टीज आर क्लियर आई होप, राइट गाइस। सो गाइस पैरेललोग्राम एंड फर्दर उसके तीन स्पेशल केसेस, rhombus, rectangle and square, all should be clear to you like this. All right guys, I hope these are clear. All right, great guys, चलो आगे बढ़ते हैं. See guys, this is a note that you should know. In a quadrilateral rather, the area of the quadrilateral is given by half times d1 d2 sin theta. ठीक है, तो guys अभी इसके प्रूफ में हम नहीं जाएंगे. Okay, so its proof it is like other way, because आपने guys अभी पढ़ा नहीं है. It is based on the solution of triangles. So when we cover the solution of triangles, the proof will become clearer. Okay, because the area of a triangle, I'll tell you the formula basically. तो आप उसके बाद अपने आप से सोच सकते हो. The area of a triangle is given by guys if the two sides are given to you and बीच में angle theta है. As I've already told you, half base into height अभी करवाया था ना आपको. This height is what h is given by b sin theta. So what is the area of the triangle? Half base into height, which is a into h, so which will become half ab sin theta. ठीक है, so this formula is being used to prove the formula half d1 into d2 sin theta. Okay guys, so you can prove this thing. So if you want guys I can explain basically. तो इस छोटे से triangle का एरिया आप निकाल सकते हो. The point is guys, you add up all the areas, this triangle, this triangle, this triangle and this triangle, and उसमें भी guys ये d1 तो पूरी लेंथ है ना, तो कॉमन लेके करना पड़ेगा आपको. All right, so I'll leave this thing to you guys, but for the now time you have to remember it. Okay, okay guys, okay I'll explain basically. तो guys let's say ये लेंथ a है, ये b है, let's say this is d c and this is d. So guys if I add up all the areas, what is the total area? First triangle is half ab sin theta. The second triangle guys, यहाँ पे एंगल कितना होगा 90 minus theta होगा ना, this is 90 minus theta, so it will become half bc, but sine of 90 minus theta is, sorry 180 minus theta होगा ना, sorry guys. So what is this angle? Okay, I'll mark here. तो guys ये एंगल कितना होगा 180 minus theta. Okay, तो guys half bc sine of 180 minus theta, I'll write off once, but guys that is sin theta only, है ना. ऐसे ही guys next क्या होगा, half cd sin theta, vertically opposite angle, है ना, this is also theta, and the last side half dA sin 90 minus theta, 180 minus theta, sorry, right. So guys now what do we do? Let us combine these two, AB and BC. let's say आप फर्स्ट टू टर्म्स को कंबाइन करो, सेकंड टू टर्म्स को कंबाइन करोगे तो क्या मिलेगा, देखो हाफ a sin theta is common, it will form b plus c, sorry b plus d बन रहा है, b कॉमन आएगा, सॉरी इट इज b कॉमन, it will form a plus c. तो guys what is a plus c? that will form d1 plus ऐसे ही guys half times क्या आएगा, d कॉमन आ जाएगा एंड रादर sin theta भी कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बनेगा गाइज a plus c अगेन, दैट इज d1. तो आप गाइज देख सकते हो नाउ फर्दर इन दोनों में से हाफ d1 sin theta कॉमन आ जाएगा, है ना. सो इनसाइड आई गेट b plus d एंड दिस इज d2. सो यू कैन सी हियर हाउ द फॉर्मूला इज डिराइव्ड. चारों ट्राइंगल्स का एरिया हम ऐड करके निकाल सकते हैं. सो दैट इज गिवन बाय हाफ d1 d2 sin theta. So you can remember this thing, this formula for any quadrilateral. And guys कभी भी quadrilateral में diagonals perpendicular हो अगर, then the area would become half d1 d2, just as it became in kite.
काइट में भी इसी तरह से बन जाएगा। ओके, आई होप गाइस सबको ये मेथड क्लियर है। ओके, ऑलराइट, ग्रेट गाइस। So now guys, let us solve some questions based on these. We have done enough theory now. I hope you have guys understood everything. I had to get go a bit fast, but guys आप slow करके देख सकते हो, थोड़ा pause करते करते साथ साथ में try करके prove करो. I know it will take some time guys, but एक बार अगर आपने ये try खुद से कर लिया है ना, so then all the properties will become natural to you, naturally to you, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा ज्यादा. All right, let's solve some question guys. Let's see. All right, so guys, let us say L and M are the midpoints of the diagonals BD and AC respectively of a quadrilateral ABCD. So guys, let us draw a quadrilateral ABCD. Okay, थोड़ा अलग से बना देते हैं. Okay, let us see. So let us name it A, B, C and D. Okay, I'll name it here. So let us name it naturally जैसे लिखते हैं A, B, C, D. तो guys क्या दिया हुआ है? L and M are the midpoints of the diagonals BD and AC. Okay, let us connect BD and AC. Okay, let's connect BD एंड AC. ओके, ये कनेक्ट कर दिया. तो गाइस उनके क्या है, मिड पॉइंट्स हैं. BD का मिड पॉइंट L. ओके, लेट्स से दिस इज L एंड दिस इज M. ओके, ओके, नाउ व्हाट, थ्रू D ड्रॉ DE इक्वल एंड पैरेलल टू AB. ओके, AB के इक्वल और पैरेलल गाइस हमें D के थ्रू एक लाइन ड्रॉ करनी है. ओके, दैट माइट बी समथिंग लाइक दिस. यहां तक बना देते हैं. ओके, although it should go further. AB के पैरेलल बनानी है. ओके, जस्ट अ सेकेंड. ओके, DE दिस इज इक्वल एंड पैरेलल टू AB. तो इक्वल भी है, पैरेलल भी बनेगी. सो लेट अस कनेक्ट BE. ओके, सो नाउ गाइस शो दैट EC. ओके, बहुत अच्छी सी डायग्राम नहीं बन पाई है, बट एनीवेज EC इज पैरेलल टू LM. ओके, वी आर नॉट एबल टू ड्रॉ इट लाइक दिस. तो गाइस थोड़ा सही से बनाने की कोशिश करते हैं. यहां तक बना देते हैं. ओके, सो दिस इज पॉइंट E. लेट्स से दिस इज इक्वल एंड पैरेलल टू दिस. तो गाइस हमें EC के ऊपर कमेंट करना है दैट EC इज पैरेलल टू LM. ओके, नेवर माइंड. तो गाइस नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग. लेट अस जॉइन EB. EB को ज्वाइन कर देता हूं. गाइस डायग्राम से लग नहीं रहा होगा, बट लेट अस अंडरस्टैंड. सिंस AB एंड DE, AB is parallel to DE, given है ना, and AB is also equal to DE. So that will mean ABED is a parallelogram, है ना, pair of opposite sides are equal and parallel. तो गाइस अगर मैं AE को ड्रॉ करूंगा, if I draw AE, that is a diagonal, है ना, it should pass through L. Why so? Because guys BD and AE are diagonals, they bisect each other, है ना, तो it should pass through L. The diagonal AE must pass through L because AE and BD are the diagonals and they bisect each other, है ना, diagonals bisect करते हैं parallelogram में. तो L is the midpoint of AE as well, है ना. So can I say AL is equal to LE, right? Is this property clear? Diagonals bisect each other. तो गाइस और L उसके ऊपर ही आएगा because BD का मिड पॉइंट L, है ना, BD का मिड पॉइंट L. Now we also know AM is equal to MC, है ना, diagonals bisect each other. और वैसे भी हमने मिड पॉइंट्स लिए हैं.
So AM is equal to MC as well. So from these two things, guys, can I apply midpoint theorem? है ना, in triangle ACE, in triangle ACE, क्या लगाएंगे? Midpoint theorem, right? From midpoint theorem, I will say LM is parallel to EC, and rather LM is also half of EC, है ना? तो and is double of it, वो भी हमने प्रूव कर दिया. EC is twice of LM, right guys? So guys, that is how we'll prove it. तो हमने सब कुछ दिया हुआ था, तो ABCD ABED पैरेललोग्राम बना के हम आगे उसके प्रोसीड कर सकते हैं. ऑलराइट गाइस, आई होप दिस प्रोसेस इज क्लियर. ओके, ग्रेट गाइस, आगे बढ़ते हैं. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑलराइट, okay guys, in the sides AB AQ of AQB, the points P and D are chosen such that APQ is equal to ABD. Okay, okay, let me take up the diagram guys. Okay, so okay guys, I have brought the diagram here, so we'll be drawing like this. So guys, ABQ, what is given to us? ABQ ट्राइंगल है हमारे पास. AB and AQ के मिड पॉइंट्स है P और D, that we draw. Then it's given P और D कैसे चूज किए हैं, so that area of triangle APQ is equal to area of triangle ABD. Alright, तो guys ये triangles का area equal है. Now DC is drawn parallel to AB, so guys we should know this. This is drawn parallel to AB. So this line is parallel to AB. ठीक है. Cut BQ in R, वो point भी mark कर दिया. Now BC is drawn parallel to AD. Okay, so this line is parallel to BC, right? DR produced in C. So guys, what do we need to prove? That RC is equal to AP. Okay, let's see कैसे करेंगे guys. Guys, see, area of triangle APQ, area of triangle APQ is equal to area of triangle ABD. Guys, look at these two triangles carefully, ABD and APQ. तो guys, अगर मैं उसमें से APD एरिया माइनस कर दूं तो क्या होगा? What if I subtract minus area of triangle APD from both of sides? देखो क्या मिलेगा यहां से हमें. APQ minus APD will give us PDQ, है ना, area of triangle PDQ. Okay, I'm sorry. है ना, तो area of triangle PDQ is equal to what area? Now ABD minus APD is PDB. ये आ गया guys. So now consider this thing guys. We have the two triangles with the same base PD, है ना. B और Q पे ट्राइंगल बना रहे हैं और उनका एरिया इक्वल है ना, एरिया इक्वल है. So guys, this we have done earlier in the first portion of the geometry 1, that if between the two same sides on the same base we are having two equal areas of the triangles, हमने उल्टा करा था, between the two same parallel lines the triangles will have equal area with the same base. तो उसका converse भी true है. If there are two triangles with the same base and the two areas are equal on the same side, that means this will prove guys, इससे हमें क्या मिलेगा, that PD is parallel to BQ. We'll get PD is parallel to BQ. ठीक है. तो guys, finally हमने क्या find कर लिया, that PD is parallel to BQ, right? So guys, now see this. Also, AB is parallel to CD. PD is parallel to RB. So isn't this a parallelogram? देखो guys, already we can say ABCD is a parallelogram, है ना. ये तो already था, AB is parallel to CD, BC is parallel to AD. Pair of opposite sides are parallel. So ABCD is a parallelogram, but so is PDRB. But so is PDRB. है ना, ये भी तो पैरेललोग्राम हो गया. हमने प्रूव कर दिया PD is parallel to BQ, which is BR, and DR is parallel to PB already. वो भी तो दिया ही हुआ है, तो ये भी तो पैरेललोग्राम बन गया. So what does this mean guys? ABCD is a parallelogram
सो कैन आई से AB इज इक्वल टू CD होगा, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, है ना. एंड गाइस सिंस PDRB is a parallelogram, can I say PB is equal to DR? PB is equal to DR. So guys, subtract these two. Just subtract the two equations. What is AB minus PB? AB minus PB will give us AP. And what is CD minus DR? CD minus DR will give us RC. That's it. यही तो प्रूव करना था guys. That's RC is equal to AP. ठीक है ना. तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं with the help of parallelograms, properties of parallelograms. और हमने एरिया से पहले निकाला PQ PD parallel to BQ. So you can see guys how we are applying these properties and how these are very useful while applying, right? So let us confirm the answer. So here it is. So you can see the solution later also guys. I'll share these slides, है ना, in the PDF form. You can see it later on. So guys, if you like the questions and like the video, please like, share and subscribe to our channel and like the videos. And guys, if you are interested in the full course of IOQM, then you can go for the full IOQM course. So guys, this course comprises of all the chapters that are relevant for IOQM, है ना. You can find the video for that as well. I have given complete details about the course. You can find it there. And so the course is very reasonably priced. You'll get ample test practice in that course also. There are 18 tests, 10 full tests and 8 to 7 or 8 part tests, right? So you'll get a total of very good practice through 18 tests. For IUCAM you will be thoroughly prepared and it will be comprehensive course जिसमें सारी theory cover हो रही है, सारे chapters cover हो रहे हैं. Okay, so you can use our coupon code in the app or you can watch the videos on the web as well. Okay, so all the details are given in the other video. Please check it out. It is given in the description. Okay, also, so please visit that. And if you like the video, you can subscribe to our complete course. Okay, buy the whole course and you can watch all the videos. Okay, and be prepared very well for IOQM. All right, thank you guys. Thank you.